dear students, welcome to Diamond Group of Institution. So today we are going discussing about the algebraic identities. So already we completed the 7th grade, dear students, 7 classes we completed. Now we are going to the 8th class. This is the polynomial is a big chapter. We are coming to end of the chapter. हम चैप्टर के एंड तक आ चुके हैं डियर स्टूडेंट्स. सो इसके आज जो डिस्कस करने जा रहा है उसका जो टॉपिक का नाम क्या है तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज. आइडेंटिटीज मतलब फार्मूलाज. सो ऑलरेडी हम प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर इन द 8th स्टैंडर्ड में या 7th स्टैंडर्ड में स्टडी करें. ये 4 आइडेंटिटी ऑलरेडी हम स्टडी करें. इस साल आपको 7th में क्या है, सॉरी 9th में क्या है बोले तो आपको 8 आइडेंटिटीज के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन सिलेबस को दिया गया है. लेकिन A4 जो आइडेंटिटीज है हम ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में हम स्टडी कर चुके हैं. ओके, सो प्रीवियस ईयर में स्टडी कर चुके हैं. उधर क्या दिया था, उधर a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड x प्लस a x प्लस बी बोल के ऐसा दिया था. लेकिन इधर क्या दिए, x प्लस वाई होल स्क्वायर सेम x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x माइनस वाई होल स्क्वायर मींस x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर एंड x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर मींस x प्लस y x माइनस y और x प्लस a x प्लस b. इसका जो ऐसा आइडेंटिटीज दिया है इसका इन चारों का मैंने थोड़ा क्या करूँगा आपको ये आइडेंटिटी कैसे आएगा बोल के मैं बताऊंगा. उसी तरह नेक्स्ट जो 4 आइडेंटिटीज है उसका भी उसी तरह क्या आएगा बेटा आंसर आएगा. उसके बाद वी विल सी द एग्जांपल क्वेश्चन अबाउट ऑन दिस 4 आइडेंटिटीज. ये 4 आइडेंटिटी के ऊपर जो क्वेश्चंस है एग्जांपल क्वेश्चन वो करते जाएंगे. देन वी विल गो टू द एक्सरसाइज डियर स्टूडेंट्स. ओके, लेट अस सी द हियर x plus y होल स्क्वायर. आई एम टेकिंग दिस इज फर्स्ट वन. कैसे आएगा ये फार्मूला. ओके, क्वेश्चन इज व्हाट x plus a sorry x plus y whole square. X plus y whole square means x plus y is how many times? 2 times. Whole square means 2 times. X plus y is 2 times. Whole square means 2 times. Now this is the multiplication of binomial. दो terms रहे तो यानी 2 terms we can say what binomial. 1 terms we can say monomial. ये क्या है, the product of the binomial. I am taking this is x in the bracket, this one is x plus y and plus y in the bracket x plus y. Now dear students, here x into x square and plus x into y xy and this is plus into plus y into x xy and plus y into y square. Then here look at dear students, x square plus x plus y how many times? 2 times dear students. That's why here 2xy and plus y square. I thought you understood this one. Okay, this identity you understood very well dear students. ऐसा ये फार्मूला आ चुका है. Means x plus y square expanded form is what? x square plus 2xy plus y square. ये कैसा है बोले तो ऐसा लेके सॉल्यूशन करने के बाद ऐसा आंसर आएगा dear students. Okay, similarly x minus y square also means x minus y square means x minus y how many times? 2 times. उसको भी लेके ऐसा प्रोडक्ट करें तो ऐसा आएगा a square minus x square minus y square. This is x plus y x minus y. ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं इतना आंसर आएगा. ये दोनों को मल्टीप्लाई करते इतना आंसर आएगा. These are the 4 identity already we studied in the previous classes. इसके जो चारों भी हम स्टडी करें ना इसके ऊपर क्या है डियर स्टूडेंट्स. अब एग्जांपल क्वेश्चन है, एक एग्जांपल क्वेश्चन करते जाएंगे डियर स्टूडेंट्स. ओके, हम एग्जांपल क्वेश्चन अब करते जाएंगे. लेट अस सी द एग्जांपल क्वेश्चन. यस डियर स्टूडेंट्स, नाउ we discuss about the example number 16. What is the question? Find the following products using the appropriate identities. जो आइडेंटिटीज कौन सा आइडेंटिटी यूज होता है वो आइडेंटिटी लेके हम क्या करना चाहिए, इसको सॉल्यूशन करना बोल के हमको 2 क्वेश्चन दिया है इस एग्जांपल में. वन ऑफ द क्वेश्चन इज इन द ब्रैकेट x plus 3 bracket close plus in the bracket x plus 3 is there and another one x minus 3 bracket close x plus 5 x minus 3 x plus 5 is there. Let us see the first question solution dear students. So first question solution is like that is that here x plus 3 both are same numbers, same factors are there.
So same is there, same binomial. This is also same, this is also same. Means we can take this is x plus 3 whole square. X plus 3 whole square. X plus 3 whole square. X plus 3. X plus 3. How many times is there? 2 times is there. That will be written as x plus 3 whole square. This is which identity? This is here. ये कौन सा जो आइडेंटिटी है तो x plus y whole square. This identity we can use here. Okay. हम x plus a, x plus b भी लेके भी कर सकते हैं, लेकिन very easy is what? X plus 3 and x plus 3 2 times is there. X plus 3 whole square. The identity is what? X plus y whole square is equal to x square plus 2xy plus y square. This is the identity. Okay. ये identity हम लेके हम इसको solution कर सकते हैं. Okay. So now let us see. So this is I am writing here x plus 3 whole square is equal to, this is the x, कभी भी dear students bracket में लेना बेटा, x square plus 2 x value is x only and y value is 3 and plus y square means 3 whole square. One more time dear students, expanded form x plus 3 whole square means x square means first x square and plus 2 as it is. X value is x only is there, that is you shall stood here. Next y value is here 3 is here and the next y square means 3 square. In this given factors, given question here, when we are considering here x value is equal to x only given and y value equal to is given the 3. This is very important. ऐसा separate लेना. Then simplify. So here x whole square means it is become x square only plus 2 into 3. 2 3 is 6. 6 into x is equal to 6x. Bracket means that is the multiplication dear students. And plus 3 square equal to 9. 3 square equal to dear students 9. Okay. Now so therefore here x plus 3 and x plus 3 is equal to what? X square and plus 6x plus 9 dear students. So what is the answer? x plus 3 का जो प्रोडक्ट क्या है बोले तो प्रोडक्ट is what? Product is x square plus 6x plus 9 is the our answer. Okay dear students, I thought you understood very well. इसका जो आइडेंटिटी यूज करके करना बोल के हमने बताया, हमको क्वेश्चन पूछा गया है, उसका आंसर ए आएगा dear students. Okay, one more time expression dear students. First question x plus 3. How many times? 2 times. Means we can return as x plus 3 whole square. Means this is x plus y whole square. In this x plus 3, x value is x, y value is 3 dear students. Our formula is what? X plus y whole square is equal to x square plus 2xy plus y square. Then x plus 3 here. So x square means x1 is there plus 2, x value is x, y value is 3 and plus y square means 3 square. Then x whole square is become x square. 2 3s are 6. 6 into x is x plus 3 square equal to 3 square equal to 9 dear students. Then here first previous question x plus 3 and x plus 3. X plus 3 into x plus 3 is equal to x square plus 6x plus 9. This is the first question answer dear students. Next we will go to the second question. Okay. Second question dear students. So second question I am writing this side. What is the second question? Second question is given x minus 3, another one x plus 5. Here y value is not the same. That's why we cannot use what? X plus y whole square, x minus y whole square. Here we should be use the which identity here dear students? That is x plus y. Here we are using x plus a and x plus b is equal to x plus a, x plus b is equal to x square plus a plus b bracket close x plus a into b. We should be use this identity dear students. Okay. So now you take the values here. X value equal to x only is there. A value equal to -3
वैल्यू इक्वल टू 5 डियर स्टूडेंट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट आप क्या कर लेना चाहिए, वैल्यू लेना चाहिए। वैल्यू लेने के बाद आपको कंफ्यूज नहीं होता। ओके, सो x minus 3 x plus 5 we are using this identity here. Ax value is x only is there and a value is minus 3 and b value is 5. Afterwards you substitute here. So this is the here x value is x only is there. Here only very important, a value equal to what, minus 3 and plus a value equal to minus 3 plus b value is 5 and bracket close, x value is x only is there and plus a value is minus 3, b value is 5. Okay, get the board dear students. Here very important, साइन चेंज रहे तो उसको लिखने के टाइम में बहुत होशियार से ध्यान से लिखना चाहिए, क्योंकि एक ही साइन में या मल्टीप्लिकेशन या एडिशन साइन के अंदर कुछ तो मिस्टेक हुआ तो आपको क्या हो जाएगा, पूरा आपका प्रॉब्लम कितना भी अच्छा करो उसका आंसर दूसरा आएगा, आने के बाद आपका मार्क्स नहीं मिलेगा, आपका आंसर करेक्ट नहीं होगा। इसके लिए हम साइन जो चेंजेस रहता है उधर थोड़ा ध्यान से क्या करना चाहिए, लिखना, सॉल्यूशन में लिखना चाहिए। सो दिस इज x स्क्वायर प्लस a प्लस b, a वैल्यू इज minus 3 plus 5 and x value is x only is there, that's why x plus a value is minus 3, b value is 5. Then next step here, x whole square equal to, we are writing x square into, now dear student, minus 3 plus 2, minus 2 plus, you should do the subtraction, but greatest number is 5, that's why our answer it will become here 5 into x. One more time. Okay, this box in this box simplification is what, sorry, answer it is came here 2 dear students, sorry, minus into plus minus, we are doing subtraction, greatest number is 5, that property sign is plus, that's why our answer it will become in the positive. 5 minus 3 is equal to 2, x as it is. Now plus into minus, minus into plus, minus, 3 5 is 15. सर आप कंफ्यूज नहीं कर लेना, सर इधर बड़े नंबर का, बड़ा नंबर का प्रॉपर्टी साइन आप आंसर में रखे, लेकिन आप इधर बड़े नंबर का प्रॉपर्टी का साइन आंसर में नहीं रखे, बल्कि आपको क्वेश्चन आ सकता है। मैंने पहले भी बताया डियर स्टूडेंट्स, व्हेन वी आर डूइंग द एडिशन और सब्ट्रैक्शन, हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के टाइम में जो साइन, जो प्रोनाउंसिएशन होता है प्लस इंटू माइनस, हम काम क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए, लेकिन हम उसमें बड़ा नंबर कौन सा है उसका साइन हम आंसर में रखना चाहिए when we are doing the addition or subtraction. When we are doing the multiplication, हम जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर रहे हैं, करने के टाइम में हमारा जो प्रोनाउंसिएशन आता है प्लस इंटू प्लस आंसर भी प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस आंसर भी प्लस इंटू माइनस आंसर माइनस इंटू प्लस आंसर माइनस. ओके, सो हियर माइनस इंटू प्लस माइनस and product. So 5 is 15. Next step dear students, here x square and plus 2 into x, 2x and minus 15 is our answer. So therefore you write here what, x minus 3 and x plus 5 is equal to, x plus 5 is equal to, answer is x square plus 2x minus 15 is our answer dear students. Okay, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट 16 एग्जांपल क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए थे, 2 क्वेश्चन का आंसर ये आएगा डियर स्टूडेंट्स, कंफ्यूज नहीं कर लेना, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये स्टेप आप अच्छी तरह लिख लिए तो अच्छी तरह आपको एक स्टेप आता है, ये स्टेप आने के बाद आपका आंसर आता है। खाना खाने के टाइम में क्या खाते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अच्छी तरह बैठ के सिस्टमेटिकली बैठ के हम खाना खाएं तो कितना कैसा सेटिस्फेक्शन रहता है। सिस्टमेटिकली बैठ के सिस्टमेटिकली हम सोने के टाइम में सिस्टमेटिकली जो रेडी करके हम सोते हैं तभी से हमको नींद अच्छा आता है। उसी तरह आप सिस्टमेटिकली लिखे तो आपका सॉल्यूशन भी एंड तक सिस्टमेटिकली आएगा डियर स्टूडेंट्स। ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। आई थॉट यू अंडरस्टूड दिस वन, लेट अस गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन। यस डियर स्टूडेंट्स, ओके, so algebraic identity example number 17 question is there. What is the 17th question? Evaluate 105 into 106 without multiplying directly. उन्होंने क्या पूछा है, डायरेक्ट जो ट्रेडिशनल मेथड है, हम जो
बचपन में एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखने के बाद जो मल्टीप्लिकेशन करते थे वैसा मल्टीप्लिकेशन नहीं करना चाहिए। हम क्या करना, जो डायरेक्टली नहीं करना, आइडेंटिटी यूज करके क्या करना, इसका मल्टीप्लिकेशन करो बोल के हमको बता रहा है डिरेक्शन। ओके, लेट अस गो टू द सॉल्यूशन हियर। सो आई एम राइटिंग दिस इज 105 is there now. This is I am taking 100 plus 5. 100 plus 5 dear students. 106 means 100 plus 6. 100 plus 6 means this is considered x. This is considered a. This is considered x. This is considered b. X plus a and x plus b identity is there. Okay. So now here we are using the which identity here? X plus a and x plus b. Yeah. X plus a and x plus b is equal to, identity is what? X square plus in the bracket a plus b bracket close x and plus a into b. This is the our identity. We are which identity we are using here? X square plus a plus b bracket close x and plus a into b. Then you take it the values first. So here a value is x value equal to is given 100 and a value equal to we got here 5 and b value we got here 6. This is the very important. Okay, a हमको बहुत important रहेगा। a लेके हम क्या करना चाहिए, सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू लेके हम सब्स्टिट्यूट वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके सॉल्यूशन करना चाहिए। ओके, लेट अस सी here x is there, x value is x square no, that is we are taking 100 square plus a plus b means what, 5 plus 6 and here x is there no, that is what, 100 and plus 5 x and a into b means we are taking 5 into here 6. One more time dear students, here x square means 100 square plus 5 plus b, a plus b means 5 plus 6 into 100 plus a into b 5 into 6. Okay, now simplification, multiplication. 100 square, 1 square equal to 1. 2 zeros means we should take, it will become in the square 4 0. Okay, how much come it here? Here 1 and here 10. How many 0? 4 0. 1 10 100 1000 10,000. 100 square equal to 10,000 plus here 5 in plus 6 is equal to how much? 11. 11 into 1 is equal to 11. Remaining 2 0 as it is. And plus 5 6 30 multiplication. One more time dear students. 100 square equal to 10,000. 1 10 100 1000 नहीं आएगा। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 2 zeros रहे तो 4 0 and plus 5 plus 6 11, 11 into 1 11, 2 zeros as it is plus here multiplication, answer will become 30, 5 6 are 30. Now dear students, here is what, 0 plus 0 unit place, 0 plus unit place, 0 plus 0 plus 0, answer here 0. Okay, 10 place 3 plus 0, 3 only. 3 plus 0, 3 1. Answer we got here 3. 100 plus, there is no number. 100 plus is here 1. 100 plus is here 0. 1 plus 100 equal to 1. Sorry, 1 plus 0 equal to 1. And 1000 plus here 1 is there. And here 1000 plus 0. Answer is 1. And 10,000 plus here 1 is there 1. Answer we got here 11,130. Dear student, I thought you understood. Answer is what? 11,130. So here you write it what? 105 into 106 is equal to, answer we got 11,130. I thought you understood this solution. आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके भी चेक कर लो बच्चों, इसका आंसर इतना आएगा। ओके, इन द रीडर आल्सो आंसर केम 11130. दिस इज आवर आंसर. दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट. ऑलरेडी when we did the वेरिएबल प्रॉब्लम्स, दिस इज बिकम वेरी वेरी इजी. इधर लेने के टाइम में थोड़ा ध्यान से लेना चाहिए
लेके जो कौन सा जो आइडेंटिटी यूज होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके अंदर एक वैल्यूज लेना, वैल्यू लेके वैल्यूज करेक्ट सब्स्टिट्यूट करना, करेक्ट सब्स्टिट्यूट करके उसको मल्टीप्लाई फर्स्ट करना, बाद में एडिशन करना, एडिशन करके इतना आंसर आता है, लास्ट एंड में ऐसा आप क्या करना सिस्टमेटिकली लिखना चाहिए स्टूडेंट्स। लेट अस गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन। Okay, now I thought you understood 17th question. Now we will go to the 18th question, dear students. Yes, dear students, come to the example number 18. Example number 18 is what? Factorization. Factorize. तो हम प्रीवियस जो बीट में क्या कर रहे थे, हमको फैक्टर देता था, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते थे, लेकिन अब क्या दे चुका है, एक्सपेंडेड फॉर्म में दे चुका है, हम क्या करना चाहिए, उसको फैक्टराइजेशन में लिखना चाहिए, फैक्टराइजेशन करना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट ऑलरेडी वी स्टडीड इन द स्क्वायर नंबर्स। ओके, हमारा जो आइडेंटिटी है x प्लस वाई होल स्क्वायर है, x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर यू चेक इट, फर्स्ट नंबर इज 49, दिस इज द सेवन सम ऑफ द 49, a स्क्वायर इक्वल टू a, and last number is 25, 25 as a square number. Okay, that's why when we are taking the square root here, 7 into a whole square, 7 into a whole square, 7 square equal to 49, a whole square equal to a, then here plus 2 as it is already 7a is there. Okay, 7a already 7a is there, and look at 2 sevens are 14, 14 5s are how much, 14 5s are 70। आपको समझ में नहीं आया बोले तो और एक मेथड से मैं आपको पढ़ाऊंगा, दैट इज वेरी वेरी इजी। सो लाइक दैट दिस इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मींस सॉरी x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, दिस इज आई एम टेकिंग x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन, 49 a square given. Okay, 49 a square, x square is equal to 49 a square, then here x whole square, इसको whole square बनाया है, बनाए a क्या हो जाएगा, 7a whole square, then a value x value is equal to we got 7a। one more time dear students, x square equal to 49 a square, and इसको whole square में बनाया बोले तो 49 square root is 7, a square root is a, then x value is equal to we got here 7a। Next step, last one is y square is there now, so y square is written as, is their answer 25b square, 25b square, when this y square we are making the whole square, it is become 25 square root is 5b whole square। now look at it, 25 का square root 5, b square का square root b, then y value is equal to what, 5b, y value equal to 5b, x square is become 14, x square is 49, a square is there, means x value is 7a, y square is 25, b square is there, means y value is 5b, and between you check it, between is what, 70 AB is there, 70 AB, check it। so here formula is what, or formula 2, a value is, sorry x value is 7a and y value is 5b, check it here, 2 7s are 14, 2 7s are 14, 14 5s are 70, a into b, a, both answers came here same, that's why we can write here what, therefore 49 a square plus 70 ab plus 25 b square equal to, we written as, we take the two factors are which one, 7a plus 5b, this is 5b, how many times, 2 times, 7a plus 5b, okay, x value is 7a, y value is 5, this is which identity this is, this is the what, x plus y whole square is equal to x square plus 2xy plus y square,
means this is written as x plus y is how many times? 2 times. X plus y how many times? 2 times. This is the identity, dear students. A square x square plus 2xy plus y square का जो आइडेंटिटी के अंदर है, इस आइडेंटिटी को लेके हम क्या करना चाहिए, ए आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना चाहिए करके दो फैक्टर्स कौन सा हो जाएगा, 7a plus 5b and 7a plus 5b हो जाएगा. So one more time repeat here. This is considered square. This is x square. This is 2xy. This is y square. You consider it. This is x square and plus this is 2xy and plus this is y square. Okay. First x square equal to, already we know that is the 49a square. Means x whole square equal to 7a whole square. Means x value equal to what? X value equal to 7a. Similarly, y square equal to 25b square. Is there or not? So y whole square, ऊपर whole square ले तो 25 का square root 5 and b square का square root b means y equal to 5b. Then you check it. This is a square, x square, y square. Answer correct came this much. Means 2xy you check it. 2xy is given 70ab. Check it. 2x value is 7a and y value is 5b. When we did the multiplication, we got here answer 70ab only. Then we can say the given this expanded form is in the form of what? X square plus 2x square plus y square is equal to x plus y whole square. That's why end arrow here 49a square plus 70ab plus 25b square is equal to 7a plus 5b. 7a plus 5b. This is the two factors of this given expanded form. This given the question. Okay, I thought you understood very well. Okay, next in this bit only another one question is there. I will explain now. Okay, now in the 18th example 18th question, I will the two questions are there. One is I explained here only. Next I will explain. Yes, dear students. Now in this 18th example question, I will the two questions are there. First question already I explained to you. Now we are going to the second question. Second question is what? 25 upon 4x square minus y square upon 9 is there. So one more time, 25 upon 4 x square minus y square upon 9. This is the question. This is the expanded form. This is this expanded form which we find out the factors. इसका हम फैक्टर फाइंड करना चाहिए. ये कौन सा फॉर्म में है? Look at 25 also square number, 4 also square number, 9 also square number. Means this is the x square minus y square identity के अंदर है ये. Okay. First we should be write the identity. What is that? What is that? That is the x square minus y square is equal to x plus y and another one x minus y. This is the identity. Okay. So now look at dear students. Here solution. This is 25 x square. X square is equal to what is given? 25 upon 4 x square given. Okay. Then here x whole square, इसको whole square बनाया बोले तो ये क्या बन जाएगा? 5/2 x whole square बन जाएगा. Means x value is equal to what? 5 upon 2 x. One more time dear students. This is very easy. X square is given 25 upon 4 x square. This x square we are converting in the whole square. x square को whole square में कन्वर्ट कर रहे बोले तो इसको भी क्या होना चाहिए? whole square में कन्वर्ट करना बोले तो 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 5. Means 5 whole square means 5 square equal to 25. x square equal to x square. 2 square equal to 4. Then so x value is equal to what? 5 upon 2 x. So similarly next what is given? Y square upon 4 is upon 9 is there. Sorry, this is the y square. Y square is given y square upon 9 given. Means here y whole square is become y upon 3 whole square. Y upon 3 whole square. Then y is equal to what? Y upon 3. Y upon 3. This is the first one. X value is this much and y value is this much. So our condition is what? X. This is in the form of x square minus y square. So condition is what? Here 25 upon 4 x square minus
y square upon 9 is equal to what? X plus y, x minus y is written as 5 upon 2x plus y upon 3, one factor. Another one, 5 upon 2x minus y upon 3, another one factor. I thought you understood dear students this solution. इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म का फैक्टर्स क्या है बोले तो ये फैक्टर्स है. कंडीशन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस y एंड x माइनस y. So condition x square minus y square is equal to x plus y, x minus y. Here x square minus y square is equal to x plus y, x minus y. So one more time dear students, this is the square, this is square. We are using this identity dear students here. Which one? X square minus y square is equal to here x plus y and x minus y. We are using this identity. X square is considered 25 x square by 4 means x whole square equal to 5 by 2 x whole square means x value is 5 upon 2 x. Similarly y value is y upon 3. So then we wrote here only this is x plus y and x minus y. This is the solution of this question. Okay. So next some next identity is there. So that is also we will explain the next period. I thought today you understood these example questions and identities also understood. So like that only we will go to the next identities also I will explain and example also explain. Then we will go to the exercise question dear students. Total 8 identities are there. Only 4 previously you studied. New again 4 identities are there. I will explain that is next question dear students. Okay. Today we want to stop here only. So in today whatever I explained to you, how many questions explained to you, there anywhere you are getting the confusion, you can call to me. I will clarify your doubt and don't sit simply. हमको हम कैसे पूछना बोल के आप नहीं बैठना चाहिए, जरूर पूछना चाहिए, जरूर कॉल करना चाहिए. कॉल करके हमको पूछना चाहिए, हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे. I thought you understood today. Today you will give to me permission. Today I want to stop here only. Okay dear students, thank you dear student, thank you and all.